तो चलिए शुरू करते हैं. So, very good evening, friends. Today, let us discuss the remaining concepts of Chapter 6, which deals with social audit. So, we were at 6.10. 6.10 talks of understanding the entity and its environment. So, first of all, we should understand the entity of which we are doing the social audit. So, the social auditor should conduct a preliminary entity review. Even if we audit an organization, a business enterprise, then also we try to understand the business and the environment. So similarly, while conducting social audit, the social auditor should conduct a preliminary entity review to understand and the social and cultural environment it operates to establish the primacy of its social intent. As we try to understand the business environment in case of financial audit, similarly, in case of social audit, we try to conduct a preliminary review of the entity so that we are able to understand the social and cultural environment it is operating in. So this is required for the purpose of identifying and assessing the risks of material misstatements. So entity overview. How to undertake this entity overview? A sample of indicative points for entity overview could include the following. First of all, the legal identity entity and its intent or objective. So we go through the bylaws, we go through the memorandum, we go through the rules, we go through the certificate of incorporation, etc., so that we are able to identify the legal identity of the entity and what are the intents or objectives of that entity. Second is projects and timelines for which the audit is to be carried out, because this audit has to be carried out for a specific time period and of specific projects. So we should have a basic understanding of the projects or timelines for which the audit is to be carried out. Then key managerial personnel of the entities, who are the persons involved behind the entity, that also we have to see. Then geographical regions in which the entity operates, and there could be specific indicators, there could be special indicators for that geographical region. Then policies and procedures which have been adopted by the entity, and then the governing board or promoter. So these are some of the things which we should consider while undertaking an overview of the entity. Basically, an understanding of the environment in which it is operating, the memorandum of association, bylaws of the society, projects it is undertaking, timelines for which we are carrying out the audit, who are the persons involved, the region involved, and the policies and procedures. Second is the social objectives and impact overview. The social auditor should conduct a preliminary review on the social objective and impact overview of the entity's activities. So we have to conduct a preliminary review on the social objective and impact overview of the entity's activities. So what are the sample indicative points for social objective and impact overview? First could be the stated objectives of the project or program. So what are the stated objects? Because every project, it must be having a project report or some document which could be describing the activities the entity is undertaking. So we have to see what were the stated objectives of the project or program, because sometimes they might have even obtained a sanction from the government, or they might have obtained grant, and they might have mooted a proposal for the same. So we have to see the stated objectives of the project or program. Then we have to see the project monitoring framework, then program specific baseline, midline, and endline assessment reports, if any. So baseline refers to the period when the project or activity is beginning, then midline when we are somewhere in the middle, and then endline assessment when the project is completed. Then project progress and closure report, if applicable, program specific fund utilization statement. So some projects, they mandate that, okay, you have to obtain a fund utilization certificate before you are granted further grants. So then we have to see those program specific fund utilization certificate also, which might have been issued by some professionals based on the expenditure incurred in the project. Then details of vendors and other third parties. So besides undertaking an overview of the entity, we have to have an overview of the social objective and impact. Then social auditor's response to assessed risks. So while planning the audit, the social auditor should consider the risks or challenges in implementing the project or program, which may be different for different thematic areas.
So there could be certain risks or challenges in implementing the project. So that also we have to understand. Then field level research agency and or the subject matter expert. Sometimes we have to hire the services of some field level research agency, or we have to take the services of subject matter experts. Besides employing our own team or our own personnel. So because ultimately the social auditor is responsible. So primary responsibility is of the social auditor. So it is important to note that the social auditor is primarily responsible for the social audit report, even though he or she may delegate some aspects of the audit work to field level research agency or uses work performed by other social auditors and subject matter experts. So therefore, the social auditor is encouraged to plan necessary procedures to monitor, track, and review the work of the field level research agency and or subject matter experts. The procedures must be adequate and relevant to the audit purpose. The social auditor should consider the significant findings or assessments of the assistants, field level research agency, or other social auditors or subject matter experts. Then the social auditor should evaluate whether the subject matter expert has the necessary competence, capabilities, and objectivity for social auditor's purpose. Suppose you have hired the services of, say, someone who is expert in, uh, say, collecting sample data, some statistical expert, so that he can handle voluminous data, because you are dealing with lot of people. So you have to see whether the person you have hired is expert, whether he has got the necessary competence or capabilities and objectivity for the social auditor's purpose. The social auditor should obtain sufficient understanding of the subject matter to determine the nature, scope, and objectives of that expert's work, and thus evaluate the adequacy of that work for the social audit. Because although we have hired an expert, but the social auditor also has to have some basic understanding of what the subject matter expert is doing, because only then he will be able to evaluate the adequacy of that work for social audit. The social auditor should have an agreement with the subject matter expert on the following matter. So whenever you are engaging an expert, so you should have an agreement with him that what will be the nature, scope, and objective of that expert's work, then respective roles and responsibilities of the social auditor and the subject matter expert. Because whenever you are hiring a subject matter expert, you will not go much into the details of the work he is doing, but you have to have an overall understanding, so that whatever he is doing, you are able to understand whether he is doing correctly or not, or whether he has got the necessary competence and ability to do or handle that work. But there should be clear-cut alignation of roles and responsibilities of the social auditor and the subject matter expert. Then the communication type, format, and frequency between the social auditor and the subject matter expert. Then non-disclosure agreement with the subject matter expert. Then the relevance and reasonableness of the subject matter expert's findings or conclusions and their consistency with other evidence. So we have to assimilate whatever evidence we are gathering otherwise and what are the findings of that subject matter expert. Then relevance and reasonableness of the assumptions used by the subject matter expert in the given circumstance, and relevance, competence, completeness, and accuracy of the source data used by the subject matter expert. So we have to see all these things. The social auditor should not refer to the work of a subject matter expert in social audit report unless required by law or regulation. So although you are utilizing the services of a subject matter expert, but that reference need not come in the social audit report unless it is mandated by some law or regulation. Because if you mention the subject matter expert's work in the audit report, it means to some extent you are making your audit report also subject to his opinion, although it is not so. So normally the reference to the subject matter expert should not come unless it is required by some law or regulation. So if such reference is required by law or regulation, the social auditor should indicate in the social audit report that the reference does not reduce the social auditor's responsibility for the social audit. The next is documentation. The social auditor should prepare on a timely basis engagement documentation that provides a record for the social audit report that is sufficient and appropriate to understand
the nature, timing, and extent of the procedures performed to comply with this framework, the results of the procedures performed and the evidence obtained, and significant issues observed during the engagement and the recommendations for improvements in the future. So we have to see all these things. Documentation has to be maintained. The social auditor should assemble the engagement documentation in an engagement file, whether maintained in hard copy or soft copy. He or she should complete the administrative process of assembling the final engagement file on a timely basis, usually not more than 60 days after the date of the social audit report. Like in case of normal audit also, we prepare an audit file. So similarly, we have to assemble the engagement documentation in an engagement file. You can maintain it in hard copy or soft copy, but this administrative work of completing the filing work of assembling the final engagement file, it should be done on a timely basis, and it should not normally be done not more than 60 days after the date of the social audit report. After the assembly of the final engagement file has been completed, the social auditor should not delete or discard engagement documentation of any nature before the end of its retention period, because there is a definite retention period for which such records have to be maintained. So before that, the record should not be discarded. Because once the audit assignment is complete, we normally keep those files separate. So normally we should try to complete it not more than 60 days after the date of the social audit report. Second point is materiality. The social auditor should identify material issues when assessing impact of the social project. Materiality should consider the context of quantitative and qualitative factors and the effect of these factors on the evaluation of the subject matter. So, the social auditor, he has to identify the material issues also when assessing impact of the social project. So, what is material? The material has to be, what is material and what is not has to be decided. The context has to be the quantitative and qualitative factors and the effect of these factors on the evaluation of the subject matter. Third is internal controls. The social auditor should understand and verify internal controls available for the social project management, progress tracking, and quality assurance and procedures. Internal control systems, they help track and assess impact measurements and performance. Next in line is fieldwork process or sampling and data collection. So first is documentation, then materiality, internal controls, and fieldwork process or sampling and data collection. So social audit engagement should consider the following while planning the field work for sampling and data collection required for social audit. First is need assessments obtaining programs or project undertakings. So first of all, we have to consider the various assessments which are to be conducted at the beginning, in the middle, and at the end. So the social auditor should consider the baseline, midline, and endline assessment report, if available, of the social project being audited. The baseline measurement is needed to establish the starting point. In any project or program or project-based activity, later midline and endline assessment give the auditor insight on the opportunities and challenges for the social audit. So establishing the baseline is critical to measure what changed due to the intervention, because this intervention was the project or activity that we have undertaken. So we have to see what was at the beginning, what was the situation at the beginning, and what change this intervention has brought. Second is the sample size. So sampling is a process of selection of a part of the population or universe to engage, interact, assess, and obtain feedback about the social project. The sample size will be determined by the data availability and accessibility of the beneficiaries. Then determining the sample size. So how to determine the sample size? Sample size will determine on the type of the universe. So first of all, we have to see the overall scenario, whatever data is available, whatever documents, whatever information is available. And out of that, we have to select the sample size. So type of universe is very important. Then sampling unit, sample size, and sampling methodology. So type of universe is the first step in a sample design is defining the set of objects
aggregates of elements technically defined as population or universe. So universe can be finite or infinite. That is where the number of items or elements is certain, the universe is finite. If the number of items or elements is not certain, then the universe is not finite. Second is the sampling unit. Sampling unit can be defined as the minimum unit for observation. So that acts as a building block of the data. For instance, social unit, that is family, school, religious place, or geographical unit, that is state, district, block, or village, etc. Third is the sample size. So this can be defined as a number of items, objects, or elements selected from universe or population to constitute a sample for conducting impact study. Sample size determination depends on many factors such as time, cost, facility, etc. In general, larger samples are better, but they also require more resources in terms of time, cost, and facilities, etc. Next is the sampling methodology. The choice of the sampling method is influenced by the objectives of the evaluation, oblique research, availability of financial resources, time constraints, and the nature of the problem to be investigated. For calculating statistically significant sample sizes, one must define the confidence interval and margin of error. So these are the four factors which are helpful in determining the sample size. So type of universe, whether it is finite or infinite, whether the uh, sample size is very large. Then sampling unit could be a family, school, religious place, geographical unit, state, district, block, taluka, village, etc. Then sample size. So sample size will will be dependent upon many factors such as time, cost, facility, etc. Naturally, larger the sample, the better, but it will involve more cost. It will involve more resources. So we have to uh, accordingly decide what is the uh, best sample size. And next is the sampling methodology. So what methodology has to be used? So that will depend upon the objectives of the evaluation, research, availability of financial resources, time constraints, and the nature of the problem to be investigated. So considering all this, we will uh, decide that in what way sampling has to be done. For calculating statistically significant sample sizes, one must define confidence interval and margin of error. Then is the data collection. So the social auditor should keep the following points in mind while planning for data collection for the social audit. First is the assumption and limitations of the data collection methodology. Then listing of data requirements and documents required for the social audit. Key past performance trends for the project or similar projects. Then detailed work or implementation plan with monitoring and evaluation calendars. Deviations in data trends, if any, vis-a-vis the baseline status with the reasons for deviation. Then data alignment with project outcomes, including national priorities, state priorities, and mapping with the Niti Aayog's SDG, India Index indicators. Then list of stakeholders identified, mapped and prioritized and engaged for data collection, and data required for measuring indicators may often be available in qualitative and quantitative form. So what are the points we have to consider while planning for data collection? So basically, while undertaking data collection, we have to keep in mind the assumptions and limitations of the data collection methodology. Then listing of the data requirements and documents required, key past performance indicators, detailed work or implementation plan, deviations in data trends, data alignment with project outcomes, list of stakeholders, and data required for measuring indicators. It may often be available in qualitative and quantitative form. Then data collection sources, basically two types of sources, primary and secondary. The primary source may include any one or more of individual interviews, questionnaires, focus group interviews, observations, sometimes as per the indicators that have been identified by the auditor at the planning stage. And respondents or information providers would be stakeholders of the social enterprise which affect or affected by the project, program, or project-based entity. Then secondary sources. So secondary sources may include any one or more of journal articles that comment or analyze, research textbooks, dictionaries and encyclopedias, books that interpret, analyze dissertations by research scholars, then newspaper editorials,
or opinions or pieces. So these are the secondary sources of data collection. Then data collection methods. So what are the various methods of data collection? The various methods of data collection are like, first of all is the observation, then interview method, focused group discussion. So these are the three basic methods of data collection. First is the observation. Directly you are observing. So this information is collected with direct observation using the observation checklist without interacting with the respondents. Now you are not interacting with the respondents, but you are simply observing their behavior. So the information captured under this method is focused on what is currently happening. Like in case of audit also, suppose we go and we simply observe whether the staff is observing the office timings or not, whether they are in proper uniform, or whether they are having the arms and ammunition in case of security, some security feature is required. So all these things we simply observe. So similarly, here also we can directly observe what is happening. So the information in case of observation is collected with direct observation using the observation checklist without interacting with the respondents. Suppose you are uh, assessing the social impact in case of a health clinic. So what you will observe, you will be observing the number of patients coming, the doctors, whether they are treating them properly or not, whether there are adequate medical equipments or facilities, whether the testing facility is available. So all these things you will be observing. So the information captured under this method is focused on what is currently happening. It is not impacted by either the past or future instances. So this method is independent of respondents' willingness to respond. So you need not wait for the reaction of the respondent because it is not required at all. So you are simply observing. So you are not concerned with the past or future. You are just observing the present, what is happening. And it is a direct observation. Second is the interview method. So interview requires the interviewer asking questions from the respondents. So these questions you can ask either on face-to-face contact or via telephonic discussion using structured or unstructured interviews. Some Google form could be there. A lot of uh, types could be there of the conducting the interview. And these interviews could be structured or unstructured. The interview method involves collecting information through personal interviews and is carried out in a structured way. So this method involves a series of predetermined set of questions that the interviewee responds to the defined order. Second is unstructured interviews. So in unstructured interviews, there is flexibility in approach to questioning. So this method does not follow a system of predetermined set of questions and standardized techniques of recording data. So the interviewer in unstructured interview has the freedom to ask, and if required, supplementary questions can be added or certain questions can be omitted depending on the situation. So it is some sort of, say, interview which you undergo while applying for a job. So the interviewer will modulate the questions based on the feedback he is getting, and he could go in any direction depending upon the feedback he is receiving. So nothing is decided in advance and it goes according to the flow in case of unstructured interviews, and because it is flexible in approach. Then is the focused group discussions. So in focused group discussion, a selected group of people discuss or share their opinions or experiences about given issue material to the social project, and the discussion should be moderated by the social auditor or his field team. So focused group discussion is an important tool to gather information from stakeholders and helps to validate the quantitative data collected from the beneficiaries related to the interventions. So data collection can be through online surveys, virtual interviews, satellite imagery for monitoring forestry coverage. Suppose uh, you have to monitor the climate change or the change that has happened in the forest coverage. So you may not be able to physically visit that forest. So you will be using the satellite image for that for monitoring the forestry coverage. So similarly, this data collection can be through online surveys, virtual interviews, satellite imagery, etc. Now the data quality. The social auditor has to check the data quality also based on the following indicators. First is the validity.
whether the data collected measures what it is intended to measure. Second is the reliability, whether the data measurements are based on standard methodologies. Then completeness, all data aspects are captured as per the method. Then integrity, data is protected from bias or manipulation. And there is timeliness, data is up to date and prompt. So data quality also has to be seen. Next is data analysis and interpreting results. So data cleaning is to be done to check if the data is duplicate, erroneous, or incomplete, and identify any outliers within the data sets. So if data is incorrect, outcomes and results may not be reliable, even though they may look correct. Data cleaning process may vary from data set to data set, because if we are using online surveys, then some of the questions may not be answered. A person might have filled two questionnaires. So if there is data duplicacy or there is some apparent error or incompleteness of data, so then that has to be evened out. So data cleaning is to be done. Second is data analysis is the process of collecting, modeling and analyzing data to extract insights that support decision making. So data analysis is important as it helps in making informed decisions, reduces costs and helps to target the stakeholders better. Then data gathered by the social auditor needs to be analyzed to reach audit conclusions. So data analysis is a process of understanding, measuring and reporting on the social, environmental and economic value that is being created by the project, program or project-based activity. Data may be analyzed using appropriate methods of analysis to interpret the data meaningfully, such as trend analysis, regression analysis, etc. The social auditor should take care of multiple entries and should not report anything that cannot be verified. Duplicate entries should either be removed or multiple counts should be grouped as one. For example, two beneficiaries of one family may be grouped as one in count of families. Then the results of data analysis need to be interpreted as per the theory of change. Theory of change, as we have seen, it bifurcates the entire activity into social intervention, input, output, outcome, impact. So this theory of change, the result of data analysis, it needs to be interpreted as per the theory of change, explaining the process of intended social impact of the project, program or project-based activity. The theory of change model used by the social auditor should outline the linkage from inputs to activities, to outputs, to outcomes, and ultimately to impact. The social auditor needs to study the outcomes and the real social impact on the target segments to identify gaps, if any. Social auditor should also compare the actual results with the expected outcomes and or benchmark data, baseline data, etc. In presenting the results of the analysis, the social auditor should tailor the qualitative discussion to sample representatives of each stakeholder group, since stakeholder will have different objectives and the relationship of each stakeholder to social enterprise will vary. So the stakeholders' feedback capture information to help assess the impact, validate and establishes a check and avoids overclaiming. The review process should answer the following questions. First is what was the situation before and what would have happened in the absence of this project or project-based activity. How much this project or program has contributed to the change that are evidenced as compared to the pre-project interventions. So how much unintended impacts, positive and negative, happened due to the project, program or project-based activity. So all these things we have to analyze based on the stakeholders' feedback. Then the analysis of data and its interpretation needs to be discussed with the stakeholders so that the same can be validated. The social auditor should be able to compare the actual social impact with the intended impact of the project, program or project-based activity. Then use of technology in social audit. The social auditor should determine the usage and acceptability of technology for collecting data for a social audit. The social auditor should consider the extent of usage of IT tools to be deployed for stakeholders interaction. So stakeholders interaction can be conducted through these virtual meetings or phone service. Then information database on project sites
donors or stakeholders, beneficiaries, voluntary staff, etc. Then data analysis, visualization, and presentation of infographics. So we can use the technology also in social audit. So let us see some of the questions which are given in chapter 6. It says the social audit framework in India has been developed by ICI basically to provide a social auditor guidance for conducting a social audit. Three-party relationship involving a social auditor, a responsible party, and intended users are elements of social audit engagement. The social project monitoring framework, it contributes to social auditors' understanding of the projects and its nuances, identify key evaluation parameters, thematic areas of intervention, and the benefits rendered to the community. And the social auditor plans and performs a social audit with an attitude of professional skepticism to obtain sufficient appropriate evidence of the implementation of the social program in the field. Besides these questions which are given at the end, let us again go through the chapter and then see what is relevant, what could be asked out of this chapter. So this chapter, it starts with the list of the social audit standards. Because there are 16 social audit standards, so they may not ask the name of each standard, or they may not say that what is the social audit standard which pertains to hunger or poverty, eradicating hunger or poverty. But at least the first four we must remember. So Himachal Pradesh High Court said that education and gender, we must stress on education and gender equality, because it will help us in besides this environment, culture and sport, ECS. अगर हम इतना भी याद कर लें तो हमारे को 7 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे. हिमाचल प्रदेश से बन गया हमारा हंगर और पॉवर्टी, हाई कोर्ट से बन गया आपका हेल्थ केयर, उसके बाद में एजुकेशन का है, फिर है जेंडर इक्वालिटी, और ईसीएस से बन गया एनवायरमेंट, कल्चर और स्पोर्ट्स. ठीक, तो इस तरह से हमें कुछ याद करने हैं, 16 के 16 नहीं तो कम से कम हमें 4 तो पहले याद होने चाहिए, वो नॉर्मली फर्स्ट 4 में से पूछता है. तो पहला पॉइंट तो ये है, यहां से वो एक क्वेश्चन सेट कर देता है. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो अगला क्वेश्चन आता है इसमें, ये स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड. तो स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड में वो क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि भाई जो आपको सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है कौन सा देखना है, वो आपको थीमेटिक एरिया के हिसाब से देखना है. जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी एक्टिविटी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, आपकी एक्टिविटी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपकी एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उस हिसाब से आपको जो रेलेवेंट सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड देखना है. ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई the social audit standard should be applied while conducting a social audit, and the relevant SAS thematic area should be chosen according to the activity. तो जो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड चूज करना. अच्छा, एक और इसमें जो पॉइंट पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन आ सकता है, वो यहाँ पर पूछ सकता है, द सोशल प्रोजेक्ट मे बी फॉर अ सोशल एंटरप्राइज, फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड मे ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन टू अदर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ सोशल ऑडिटर. तो ये जो सोशल प्रोजेक्ट है दोनों ही कर सकती हैं, सोशल एंटरप्राइज, और सोशल एंटरप्राइज में दोनों ही इंक्लूडेड हैं. फॉर प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपके पास, कंप्लायंस विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स. अब कंप्लायंस फॉर सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड मैंडेटरी किसके लिए है और रिकमेंडेटरी किसके लिए है? मैंडेटरी तो उनके लिए है जो कि लिस्टेड हैं ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. So compliance with social audit standard is mandatory requirement for social audit conducted for social enterprises which are listed on social stock exchange. Then the social auditors, they should ensure that the guidance available in SAS are followed while conducting the social audit. ठीक है. अच्छा, suppose he is not able to perform the social audit in accordance with SAS, तो इस पे ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है. In case a social auditor is not able to perform the social audit in accordance with social audit standard, तो उसको क्या करना है? तो he
his report should draw attention to the material departures therefrom. So the social audit report should make a mention कि भाई these are the material departures because I could not follow the social audit in accordance with social audit standards. Social auditors are expected to follow SAS in the social audits commencing on or after the effective date specified in the SAS. This also could be another question कि भाई ये इसका इफेक्टिव डेट क्या है? ये इफेक्टिव डेट है जो भी स्पेसिफाइड है इन द सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में जितने भी आप ऑडिट करोगे उसमें आपको ये SAS फॉलो करने हैं। उसके बाद में इनका फ्रेमवर्क क्या है? सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क है, इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि आपको सोशल एक्टिविटी करनी कैसे है, ये नहीं बताया है। So this social audit standard framework does not itself establish standards or provide specific requirements for the performance of specific thematic area. ठीक है भाई, पॉवर्टी दूर कैसे करनी है, क्लाइमेट में चेंज कैसे लानी है, हेल्थ केयर में चेंज कैसे लानी है, ये नहीं बताता सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड। ये बताता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है, आपको जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कैसे करना है, ये बताता है। ठीक। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, अगर इसमें से सवाल पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ SAS फ्रेमवर्क, इसमें ये है कि एप्लीकेबिलिटी कब होगी? एप्लीकेबिलिटी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स होस्टिंग ऑन ICI वेबसाइट, पूछ लेता है कई बार। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SAS फ्रेमवर्क। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली गाइडेंस दे रहा है, गाइडेंस फॉर सोशल ऑडिट। ठीक है भाई, ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड बनाए हैं इसको हम पढ़ के क्या फायदा है? इसको पढ़ के फायदा ये है कि हमें ये पता चल जाएगा ऑडिट करना कैसे है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेस्क इंटरव्यूज कैसे करने हैं, डेस्क रिव्यू कैसे करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अगर हायर करना है तो उसका कोई मेंशन करना है ऑडिट रिपोर्ट में, नहीं करना, ये सब बातें हमें सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ठीक है ना? एक तो इससे गाइडेंस मिल जाती है सोशल ऑडिट की। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी सोशल ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है स्कोप ऑफ SAS फ्रेमवर्क। इसका स्कोप क्या है? ये जो फ्रेमवर्क है सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का, दिस अप्लाइज टू सोशल ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय द सोशल ऑडिटर्स यूजिंग द प्रिंसिपल्स गिवन इन SAS। सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स में कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसके बेस पर आपको सोशल ऑडिट करना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आप दूसरी एंगेजमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स है, आप मान लो किसी का CSR वाला कोई मैटर देख रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, या कोई और दूसरी इसी टाइप की एंगेजमेंट है। कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, किसी दूसरे के लिए यूज के लिए नहीं हो रहा होता। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा कि आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो सोशल ऑडिटर रिपोर्ट में आप ये लिख दोगे कि इट विल इंक्लूड अ स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ द रिपोर्ट टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, अब ये कवर क्या नहीं करता? सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क कवर क्या नहीं करता? ये क्या कवर नहीं करता? जो आपके एलिमेंट्स हैं ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट या रिव्यू विच आर कवर्ड इन रेलिवेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग या रिव्यू स्टैंडर्ड्स। ये फाइनेंशियल ऑडिट या रिव्यू कैसे करना है ये नहीं बताता। ठीक है, और एनी अदर एंगेजमेंट्स कंडक्टेड बाय अदर ऑडिटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये भी इसके फ्रेमवर्क के स्कोप में नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है और क्या नहीं बताता। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है इसमें सोशल ऑडिट एंगेजमेंट। ये सोशल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? सोशल ऑडिट एंगेजमेंट में बेसिकली जैसे ऑडिट एंगेजमेंट होती है इसी तरह से यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हैं। भाई पहले तो ये है कि कौन उसके रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और कौन सा उसके इंटेंडेड यूजर्स है। ये 3 पार्टी रिलेशनशिप है, एक तरफ सोशल ऑडिटर है, दूसरी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और तीसरी तरफ इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, जैसे ऑडिट में भी क्या होता है, एक तरफ ऑडिटर होता है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट होती है, तीसरी तरफ शेयर होल्डर होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एक सोशल ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स है। ठीक है, उसके बाद में जो इंटरवेंशन है उसका क्या स्कोप है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका क्या स्कोप है, फिर सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क क्या है, ऑडिट एविडेंस क्या है, और सोशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये जो 3 पार्टी रिलेशनशिप्स है इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है
और जो इंटेंडेड यूजर्स हैं दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज और द सेम एंटिटी। ठीक है। फिर सोशल ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब ये जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अब किस तरह से आप जो ये सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है इसको थोड़ा देखते हैं कि सोशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो इंक्लूसिवनेस है इसमें। इंक्लूसिवनेस क्या है कि भैया जितने भी लोग हैं उसको हम इंक्लूड कर पाए। एबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली पोरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज टू एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटीज, बी पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड हैव एक्सेस टू शेयर्ड बेनिफिट्स थ्रू द इंटरवेंशन। तो पहला बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं, हम सोशल ऑडिट में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस में शामिल हो पा रहे हैं इस एक्टिविटी में या नहीं हो रही, या ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है, क्योंकि ये प्राइवेट शो तो है नहीं। ठीक है ना। ये तो पब्लिक गुड के लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें जितने ज्यादा लोग इंक्लूड होंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितनी आपकी एक्टिविटी जो है इंक्लूसिव रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। दूसरी बात क्या है कि जो आप काम कर रहे हो वो रेलेवेंट भी है कि नहीं। ठीक है। भाई कम्युनिटी की प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है। तो और कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, तो रेलेवेंस भी होनी चाहिए आप जो भी काम कर रहे हो। फिर इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी होनी चाहिए। फिर कन्वर्जेंस होनी चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक डायरेक्शन में सोच रही है, आप दूसरी डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो दूसरे पार्टनरशिप्स हैं उसमें, या कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशंस है, अदर स्टेक होल्डर्स है, वो उसके गोल और आपके गोल उसमें कन्वर्जेंस होनी चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, भाई आप तो अपना काम करके चले गए, आपने एक सोशल इंटरवेंशन कर दी, उसके बाद में वो सस्टेन कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या एग्जिट पॉलिसी वगैरह आपने कोई ड्राफ्ट की है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंस के बाद सोशल ऑडिट रिपोर्ट है कि ये सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसमें कोई बायस लैंग्वेज या इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो है आप इसको क्या कर सकते हो कि इसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ, टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस वगैरह यूज कर सकते हो टू एनहांस द क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट, द सोशल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। फिर उससे अगला आता है पॉइंट इसमें, सोशल ऑडिट का स्कोप क्या है। भाई स्कोप में ये है कि सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या जो प्रोग्राम है उसकी किस इंटेंट से हमने शुरू किया था और क्या वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है। फिर हमें जो स्टेटेड परफॉर्मेंस है उसको हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट या आउटकम्स। ठीक है। और फिर हमें वी हैव टू सजेस्ट वेज टू इंप्रूव द इम्पैक्ट मेजरमेंट एंड और परफॉर्मेंस बाय वे ऑफ ए मैनेजमेंट लेटर। भाई जैसे हम ऑडिट भी करते हैं तो ऑडिट में क्या देखते हैं, भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस क्या है, यहाँ प्रॉफिट लॉस वही इम्पैक्ट या आउटकम है कि जो भी हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हमारा इंटेंट थी वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई, और उसके लिए अगर हमें कोई सजेशन देना है मैनेजमेंट को तो वो भी हमें देना। तो ये सोशल ऑडिट का स्कोप है। स्टेक होल्डर्स जो है, स्टेक होल्डर्स तो कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, बहुत सारी लिस्ट है स्टेक होल्डर्स की। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया, जिनको बेनिफिट होना है, जो ये काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर। रेगुलेटर्स भी इसमें स्टेक होल्डर है, सोसाइटी या कम्युनिटी भी स्टेक होल्डर है, वेंडर्स भी स्टेक होल्डर, डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स। उसके बाद में सोशल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ये सोशल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में क्या है कि बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये जो आप एंगेजमेंट कर रहे हो इसमें इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। अगर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेनी है, लेकिन उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो उसके ट्रस्टीज हैं, जो उसके बेसिकली दोज चार्ज विद गवर्नेंस है। ठीक है ना। तो उनके साथ आपको डायलॉग एस्टेब्लिश करना है बेसिकली, क्योंकि आप एक तो एक्टिविटी को समझ पाओगे, ठीक है ना, उनका रिलेवेंस समझ पाओगे, ठीक है, और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी उनको टाइमली कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से यू हैव टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जैसे आप बोर्ड के साथ मीटिंग करते हो, डिफरेंट टीम हेड्स के साथ मीटिंग करते हो केस ऑफ नॉर्मल ऑडिट, तो इसी तरह से यू हैव टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है सोशल ऑडिट क्वालिटी और सोशल ऑडिटर ऑफ सोशल ऑडिट फर्म। ठीक है। आपकी अपनी क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपकी जो फर्म है, आपकी जो टीम है, उसमें आपको क्या करना है, एक तो जैसे ये करूंगा,
एक मिनट। आ गए। तो यहाँ पर थे हम लोग। तो ये जो आपको आपके जो ऑडिट फर्म है उसकी भी क्वालिटी आपको देखनी है। उसमें आपको जैसे नॉर्मल ऑडिट में टीम हेड देते हो, तो यहाँ पर भी आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर आपने कोई एक्सपर्ट्स एंगेज किए उनको भी आपने देखना है। फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्लूडिंग सोशल ऑडिट ट्रेल मॉनिटर करना है आपको, ये सब चीजें। उसके बाद में फिर प्लानिंग करनी है कि आपको अपने ऑडिट की प्लानिंग करनी है बेसिकली। जो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर सोशल ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। फिर जो फील्ड वर्कर आप लगा रहे हो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगा रहे हो, उनकी क्या नॉलेज है और उनकी नॉलेज को आपने कैसे यूज करना है। ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी नहीं है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बारे में, अनलेस देयर इज सम लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करनी है। जैसे ऑडिट फाइल आप मेंटेन करते हो, तो आपको ये जो है 60 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मटेरियलिटी आपको देखनी है, इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं, और फिर फील्ड वर्क प्रोसेस देखना है आपको, सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन कैसे करनी है आपको, ये सारी इसमें है। कौन सी मेथोडोलॉजी अपनानी है, आपका सैंपल साइज कैसे क्या होना चाहिए, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू मेथड है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये सब चीजें। फिर उसको अभी तो डेटा 60 दिन वाली जो गाइडलाइन है, वो 60 दिन का जो मेंशन किया हुआ है, उसमें 60 दिन हमें किस चीज के लिए देखने हैं? ऐसा है, वो कहता है कि जब आपका सोशल ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाए उसके हाँ। 60 दिन के अंदर आप अपनी फाइल मेंटेन कर लो, क्योंकि उसके बाद आप रख दोगे, ऑडिट तो कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक है। ठीक है। तो वो कहता है कि इसको आप रख लो, ठीक है, मतलब वो मतलब 60। हमारे पास रेडी होना चाहिए। हाँ कंप्लीट मतलब होगा, उसमें सारी हाँ, चीजें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जैसे होना अगर चाहिए, आपने और उसको मार्च में हमें। ऑडिट कंप्लीट कर लिया तो मई तक हाँ। अपनी एंगेजमेंट फाइल कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद तो आप रख ही दोगे उसको, फिर तो वो हम्म। काम आने ही नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बस रिटेंशन पीरियड तक इतना ही है। उसको रखना कब तक है? रिटेंशन पीरियड 7 ईयर है? रिटेंशन पीरियड तो इसमें 8 ईयर्स है ना मेरे हिसाब से। अलग अलग है, 2-3 जगह पे 5 ईयर्स भी दे रखा है, 8 ईयर्स भी दे रखा है। वो डिपेंड करेगा किस किस रेगुलेशन के हिसाब से, अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से अलग अलग है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, बाकी कल करते हैं फिर इसको। ये फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है इन द सोशल ऑडिट। तो 6 चैप्टर 7 चैप्टर फिर कल शुरू करते हैं। और हाँ बल्कि जी हम सर। एक काम हम और कर सकते हैं कि हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब जब पेपर दे रहे हैं उसके हिसाब से हम कर लें, हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं इसको, ताकि सब लोग आए, फिर इस तरह ऐसे कुछ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी क्या और कुछ भी है क्या इसमें आपके पास कुछ? है? जैसे अभी तो वो एक चाकू जी आते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं अभी तो। ठाकुर जी पास हो गए ना, ठाकुर जी इसीलिए तो वो सोच रहे हैं पास अब क्यों हो आऊंगा। गए? और क्या। हाँ, तो मैं वही देख रही हूँ ना कि अभी को अब तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं हूँ और ये प्रफुल्ल जी हैं, आई थिंक। हाँ हाँ हाँ। एक हाँ, तो राजेश हम जी ने ऐसा कर पेपर देना है अभी। ऐसा हम अच्छा। कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, हफ्ते में 2 दिन कर देंगे। वो आपसे मैं हाँ, अलग से क्योंकि बात कर लूंगा जब जब पेपर देने। आपने कब देना है पेपर? मेरा तो 19 को है ना। आपका 19 को है, कोई बात नहीं, तो 19 से पहले 2-3 क्लास तो हम कर ही लेंगे। और हाँ। जैसे इनका मंथ एंड में है प्रफुल्ल जी का, ऐसे हम्म। राजेश जी से भी पूछते हैं। और बाकी तो नहीं, सब देखो पास हो क्लासेस चुके का हैं। तो क्या है ना, देखो बेसिकली वैसे तो हमने पढ़ लिया है सारा। अब हाँ एक बार हम ये हाँ कर सकते हैं कि मैं एक बार छांट लूंगी कि मुझे कोई कोई से जो टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जो हम उसको कर लेंगे। इन डेप्थ में हाँ नहीं समझ आए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। वो चीजें मैं निकाल कर रखूंगी, फिर हम चैप्टर वाइज ना करके डाउट वाइज कर लेंगे। हाँ डाउट वाइज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हाँ है ना, इस तरह से क्योंकि कर देखो लेंगे, बुक हाँ। तो, हाँ, बुक तो हमने एक बार पढ़ी हुई है सारी। हाँ पड़ी हुई, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्यों चीज नहीं नहीं।